Hello everyone, I hope you guys are doing well. So today we are here to discuss the Leetcode BiWeekly contest 141 that took place yesterday. So let's start with the very first problem. So construct the minimum bitwise array 1. So there are two different problems based on the same concept. So let's discuss the first one. So you are given an array of nums consisting of prime integers and you need to construct any array of length n such that for each index I, the bitwise OR of any answer I and answer of I plus 1 is equal to nums of I. That is this particular equation. So additionally, you must minimize each of the value of answer of I in the resulting array. If it's not possible to find a value, then that satisfies the condition, then answer should be -1 and a prime number this. So basically, what question is saying? So this is the very first array that we are given: 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, and 7. So we have to construct an array answer such that it corresponds to every value in terms, and for any particular this value of answer, ORing with answer plus 1 should give us back the value in nums corresponding to every index that belongs to this. So this is what the question is saying कि हर index पर आपको ऐसी value construct करनी है such that it satisfies this equation and this answer should be the minimum. अब होगा क्या, हमें बेसिकली क्या करना है, दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, उनका और करना है, ये होता है और ऑपरेशन इन बिट्स. और ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज यार क्लियरली वेरी सिंपल होती हैं. 0 or 1 gives us 1. Let's make one like this. 1 or 1 gives us 1. 1 or 0 gives us 1. But 0 or 0 gives us. So basically, if any of the two operands is 1, we will be getting 1 in our final output. अब बेसिकली हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 2 बनाना है बाय ड्रॉइंग 2 नंबर्स. सो इफ वी ट्राई टू राइट डाउन 2 इन बाइनरी, इट विल लुक लाइक दिस. हमें इसको बाइनरी में कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग टू ऑपरेंड्स सच दैट ए और ए प्लस 1 गिव्स अस दिस. तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो द कंस्ट्रेंट्स आर प्रीटी मच वेरी लो, तो हम इसके लिए ब्रूट फोर्स यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में होगा क्या, if any number is represented in its binary form, तो if any of its bit is set, तो ये सेट हम कैसे चूज कर सकते हैं. बेसिकली इस अगर हमें कोई पर्टिकुलर बिट सेट चाहिए तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. वी नो कि अगर हमें ये बिट सेट चाहिए एंड दिस बिट इज ऑलरेडी सेट इन आवर नम्स ऑफ आई, सो आइदर इन आंसर और आंसर प्लस 1 this bit can be 0 or 1, we don't really care about this, क्योंकि at the end वो 1 बन सकती है anyhow. बट अगर कोई बिट अनसेट है इन आर नम्स, क्या हम कभी भी सेट बिट से इफ एनी बिट इज सेट इन आंसर और आई वुड से आंसर प्लस 1, अगर इसमें एक भी बिट सेट हो जाती है, दिस कॉरेस्पॉन्डिंग बिट सेट हो जाती है विच इज बेसिकली 1, क्या हम वापस से कभी 0 कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर इस 1 के साथ में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँ यूजिंग 0 और 1, ये हमेशा 1 ही देने वाला है. तो हम कभी भी आंसर के अंदर उस बिट को हम सेट ले ही नहीं सकते जो हमें नम्स में अनसेट चाहिए. तो हमने दो चीज़ें यहाँ से डिड्यूस करी, एनी बिट इफ अनसेट इन नम्स कैन नॉट बी सेट इन आंसर और आंसर प्लस 1, दोनों में नहीं होनी चाहिए.
क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी हुई तो वो एट द एंड सेट आने वाली है हमारे पास, जो कि हम नहीं चाहते। तो ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन भी, और इसका यही मीन्स था कि हमेशा जो भी वैल्यू होगी आंसर की, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल टू वाई दिस। क्योंकि जब भी हम वैल्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो लेट्स सपोज दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर नम्स, हम इस बिट को क्या कर सकते हैं, सेट अनसेट। इस बिट को भी सेट सेट नहीं कर सकते, इस बिट को हमें अनसेट रखना पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी हम सेट अनसेट, बट क्या इधर वाली हम बिट को कभी भी सेट रख सकते हैं? नहीं, ये अनसेट ही रहेगी। तो बेसिकली अगर हम किसी बिट को सेट या अनसेट रख रहे हैं, बेस्ड ऑन जो लास्ट बिट सेट है उसकी पोजीशन के हिसाब से रख रहे हैं, एंड दिस वुड ऑलवेज बी रिजल्ट इन, अगर हम इसको वन भी रख लें एंड 0 0 1, तो ये हमेशा दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन और इज इक्वल टू आर नम्स। हम क्या कर सकते हैं, सारी पॉसिबल वैल्यूज पे ट्रेवर्स कर सकते हैं फ्रॉम जीरो टिल नम्स, एंड चेक कर सकते हैं जो भी सबसे छोटी वैल्यू हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करा रही होगी, विल चूज दैट वैल्यू। सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस। So basically, we had constructed an array answer of num size initialized by -1, because we know if we don't find answer for any particular number, it would be -1. So we will travel for every number and we'll choose कि यार हमारा num होने क्या वाला है, it will be nums of I. So हम उसके लिए सारे possible candidate traverse करेंगे, which would be J. कैंडिडेट्स को ट्रैवर्स करेंगे, एंड दे कुड बी फ्रॉम जीरो टू लेस देन इज इक्वल टू नम्स, एंड विल चेक किसी भी पॉइंट पर कंडीशन, एंड उस कंडीशन प्लस वन वाला और करने पर क्या नम्स हमें वापस दे रहा है। इफ यस, वी नो दिस कैंडिडेट इज आर पॉसिबल आंसर, एंड हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। वाई वी आर ब्रेकिंग? ओनली टेक द मिनिमम कैंडिडेट। जब भी हमें मिनिमम कैंडिडेट मिल जाएगा, we'll take out from this loop and we'll return our answer. So this was the code for first problem. If we see the second problem, so let's first discuss the time complexity for this. So basically what we are doing, for every number in nums, we are iterating from 0 up till that number. So how much time complexity will this contribute? Order of n. And how much will this contribute? Order of number. And this number could be 1000 and this n could go up to 100. So for limit, we have n could go up to 100 and this number could go up to 1000. So in our case, this time complexity is order of n into number, which is nothing but 10 to the power 2 into 10 to the power 3, which is 10 to the power 5. So for first question, it is acceptable. The second question is pretty much same. There is no change in the problem statement or any example. So let's see कि क्या ये same code और same approach will work for it. So होने क्या वाला है, if the constraints are 100 and the nums of I will be 10 to the power 9. For second question, we have our n up till 100, which is same, but this number can go up to 1e9, which is nothing but 10 to the power 9. So will the save complexity work for it? Let's see. Order of n into order of number, it will be 10 to the power 2 into 10 to the power 9, which would be 10 to the power 11. This won't work for sure. हम ये तो ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। सो लेट्स टेक दिस सेकंड एग्जांपल 11 13 31. So if we take the example number 2, which is 11 13 and 31.
सो वी नो कि हमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसमें और यूज करना है, और इज नथिंग बट अ बिटवाइज ऑपरेटर. सो वी नो कि यार क्या हम, इफ वी थिंक अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ बिट्स, क्या हम कुछ बेटर कर सकते हैं. लेट्स सी how will this 11 be represented in binary. It would be 11 odd. So basically this is set 2 and 8. This is set, this is 0, this is 1. So 11 is 1 0 1 and so हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, और आई कैन से आंसर फाइंड करना है, so that if we solve it by answer plus 1 it would give us this number. तो जो ऑब्जर्वेशन हमने पिछले में यूज करी थी उसी सेम ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ डीलिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मैं कहता हूँ वी विल बी गेटिंग इनटू बिट्स. तो क्या बिट्स की फॉर्म में जाकर के वी कैन रिड्यूस आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स सी 11 को हमने जो रिप्रेजेंट करना है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. ये हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि whenever we are oring two numbers, होगा क्या, if both are zero, if both are zero at any particular bit, then only we will have zero, otherwise we will have one. Clear. So for this bit मेरे आंसर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. माई आंसर कुड बी 1, माई आंसर कुड बी 0. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिट्स, नॉट कि पूरा नंबर क्या होगा. फॉर दिस पोजीशन हमारे आंसर में क्या हो सकता है, दिस आइदर कुड बी 1, इट कुड बी 0. लेट्स से हम इसको 1 ले लेते हैं. फॉर सिमिलरली फॉर दिस वी अगेन हैव टू ऑप्शंस 1 एंड 0, बट फॉर दिस 0 हम क्या 1 और 0 दोनों को ले सकते हैं. आवर आंसर इज नो. क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको 1 ले लिया, बेसिकली अगर हमने आंसर में इसको 1 ले लिया, सो आंसर प्लस 1 में इवन इफ इट्स 0 अगर आता भी है लकीली, वो भी हम वापस से इन दोनों को और कराने के बाद कभी भी ये वापस से 0 तो ला ही नहीं पाएंगे इस पोजीशन पर नाम, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एट देन इसी के तो इक्वेट करना है इन दोनों चीज़ों को. दिस इज बेसिकली आवर आंसर. यहाँ हम आंसर प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को कभी भी नम्स से इक्वेट करा ही नहीं पाएंगे. तो हमें ये पता है कि वेन एवर वी एनकाउंटर जीरो इन आर नम्स, हम उसको कभी छेड़ ही नहीं सकते, वो हमेशा जीरो ही रहने वाला है इन आंसर एंड इन आंसर प्लस 1 एज वेल. तो ये हमेशा जीरो ही रहेंगे, वी डोंट हैव एनी चॉइस फॉर जीरो, ये जीरो ही रहेगा. सो अब 1 के लिए हमारे पास क्या चॉइस है, आइदर 1 आइदर 0. तो क्या हम हर पोजीशन पे 1 0 दोनों पॉसिबिलिटीज को ट्राई आउट करने वाले हैं. लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आएगा. लेट्स से हमें करना क्या होगा, एट द एंड हमें दो नंबर्स को, आंसर को और कराना है विद आंसर प्लस 1, और उसको इक्वल किसके लाना है, नम्स के. ये हमने देख लिया कि यार ये तो हमें गिवन नहीं है. एक चीज हमने देख ली कि यार इफ एनी बिट इज 0 इन नम्स इट कैन नॉट बी 1 इन आइदर आंसर और आंसर प्लस. ये क्लियर है. अब एक चीज और देखते हैं कि यार जब कभी भी हम किसी भी नंबर के अंदर प्लस 1 करते हैं वो बिट्स की फॉर्म में चेंज कैसे होता है. लेट्स सी. अगर 1, लेट्स टॉक अबाउट 1. ठीक है, सो 1 इज लाइक दिस. अगर हम इसके अंदर प्लस 1 करते हैं विल गेट 2. होगा क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, 2 इज समथिंग लाइक दिस. बाइनरी के अंदर हो सकता है कि भाई वो बिट स्विच हो जाए एंड नेक्स्ट फ्लिप हो जाए. सिमिलरली इफ वी टेक प्लस 1 there, so 3 would look like this. And again let's take an example for 4. It would be this. So these are the binary representations of 1 2 and 3 and 4. So whenever we are incrementing
any value by 1, what we are getting is our answer will sorry, the number of set bits will automatically will increase, or if it's not increasing, it will shift towards left. In this case, it got shift towards left. In this case, it got increased. In this case, it got shift towards left, and so on. This pattern is followed over all the numbers. So अगर हमें ये वन अचीव करना है, which is डबल वन जीरो वन, ये 11 अचीव करना है, तो हमारे पास इस वन के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, आइदर वन और आइदर। तो अगर हम इसको वन ले लेते हैं तो इशू क्या होगा कि इसको वन लेने के बाद जो भी हमारा आंसर प्लस वन, हम ये आंसर के लिए ले रहे हैं वन, तो आंसर प्लस वन में होने क्या वाला है, आइदर पीछे नंबर ऑफ सेट बिट्स बढ़ जाएंगे, जो कि मैं ना चाहता हूँ कि हो ही ना, क्योंकि अगर बट इफ मुझे नहीं पता यहाँ पे वन आएगा या नहीं आएगा, बट इट विल फॉर श्योर गोइंग टू चेंज माई बिट, और वो मैं ना चाहता ही नहीं ना हो। एंड इफ इन वर्स केस वो आगे शिफ्ट हुआ, विच इज लाइक दिस कि यार वन से टू पे जाने पे जो हो रहा है, थ्री से फोर पे जाने पे जो हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ की कोई बिट सेट हो जाएगी, तो वो तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। तो कभी भी कोई भी अगर बिट सेट है इन आर नम्स, तो हम उसको सेट नहीं रख सकते इन आर आंसर, हमें उसको अनसेट ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर श्योर आंसर प्लस वन में द थिंग्स विल गोना चेंज। तो इसलिए हम हमेशा उस बिट को अनसेट रख के देखेंगे कि यार व्हाट इफ मैं इसको अनसेट रखता हूँ, तो मेरे को बेसिकली करना क्या होगा, इस नम्स ऑफ आई को टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है, विच इज आंसर एंड आंसर प्लस वन। इन दोनों को और करके क्या मैं वापस आ सकता हूँ, एंड अगर मैंने इसमें किसी बिट को सेट अनसेट कर दिया विच वॉज इनिशियली सेट इन, क्या वो बिट वापस से आंसर प्लस वन में सेट हो रही है? इफ हो रही है तो मैं अपने आंसर को अनसेट कर सकता हूँ। एंड सिमिलरली ऐसा तो होगा नहीं कि मैं मल्टीपल बिट्स पर चेंज कर सकता हूँ आर नम्स। क्यों? क्योंकि इफ दिस इज लाइक दिस वाज आर नम्स, अगर मैं लेट सपोज इस बिट को भी चेंज कर दूं कि भाई इसको भी जीरो कर दूं, एंड अगेन इस बिट को भी जीरो कर दूं, अगर मैं इसमें हमेशा कभी भी आंसर प्लस वन करूंगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इस बिट के लिए भी कुछ वन सेट ले आएगा एंड इस बिट के लिए भी कुछ वन सेट ले आएगा, ये तो कभी होने ही नहीं वाला। इसलिए हमेशा सिंगल बिट पे डील करना इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि अगर कभी भी कोई चेंज आएगा तो हमेशा सिंगल बिट पे ही आएगा। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली वी हैव आर नम, सो वी विल चेक फॉर सेट बिट्स, क्योंकि अनसेट बिट्स से तो हमारा काम बनेगा ही, वी विल ओनली गो फॉर द चेक बिट्स। So we'll check for set bits. If any bit is set in our nums, so we know कि हमें इसको क्या करना है, can unset this, and by unsetting this we will get our target. And if target or target plus one is giving us nums back, we know this is our possible answer, and हम इसको minimize करा सकते हैं easily to choose the minimum value of answer, ये हम करा लेंगे। अब इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफरेंस आया, इनिशियली हम एन एलिमेंट्स पे तो ट्रैवर्स करेंगे, वी डोंट हैव एनी चॉइस, बट टू फाइंड आवर आंसर फॉर एनी नंबर, अर्लियर वी वर टेकिंग ऑर्डर ऑफ number time, but in this case how many bits will be there in any number? For 10 to the power 9 there are at most 31 bits, so we will be traversing from 0 to 30 in bits. So our time complexity got reduced from order of number to 32, or let's say 31. So let's say 32. That won't make any difference. So the total time complexity would be this, and which is almost constant. So this will for sure work, because order of 100 is nothing. So it will for sure gonna work. So let's see the code for this. So for every number, we know initially our answer is minus 1, because for 2, y would be minus 1. Let's see for 2. This is the binary representation for 2.
Can we find any number less than 2 that would give us answer or answer plus 1 as 2 back? Let's see. For 0, plus 1 is 1. So this is one of the pair which is 0 or 1. So it will give us 1. ये तो एक possibility नहीं बनी. Let's check for 1. So this is the pair with 1 or 2 wala. 0 0 0 1 and 0 0 1 0. इनको और करेंगे so we'll get 3 which is not equal to nums. बहुत हमें ये चाहिए. And if we choose to, so for this plus 1 is 3 and ये तो automatically greater than nums है, तो this is almost out of the league. So we will not take this into consideration. So for 2 we know कि यार कोई आंसर एग्जिस्ट करेगा ही. So we know कि this would be -1. So इसलिए initially we will initialize our answer for any number with -1 and we will traverse on the bits which is from 0 to 30 and we check if the kth bit is set in nums or not. If it's set, we know our target is nothing but nums, and by unsetting the kth bit, and to unset the kth bit there are two operations कि यार आप या तो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसको एंड कराओ, अदरवाइज यू नो कि भाई अगर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो पर्टिकुलर बिट जो हमें अनसेट करनी है, हम अगर 1 को उतने टाइम लेफ्ट शिफ्ट करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम एनी नंबर, सो वी गेट द सेम रिजल्ट्स. सो दिस इज द सिंपल चेक कि यार अगर टारगेट 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए एंड आर टारगेट, ये बेसिकली जो गिवन इक्वेशन थी इन द क्वेश्चन की, टारगेट और टारगेट प्लस 1 शुड बी इक्वल टू नम्स इफ द टारगेट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड या तो वो -1 हो इनिशियली और either this target is less than the previous target that we had chosen, so हम उसको अपडेट कर लेंगे and after completing checking for all the 31 bits we'll post our answer in the answer cell. So this was the code for second problem. I hope you had understood it. Let's move on to the third problem. So let's first read the question statement. You are given a string source of size 10 and a string pattern that is a subsequence of source, and a sorted integer array target indexes that contains indexes numbers in the range 0 to n minus 1. So let's write down what we are given in the question. Question number 3. So we are given source which is a string of size n, a target or a pattern, say, which is also a string of size m, and this is a subsequence of this source. Alright, and target indexes and an array target indexes where every value lies in the range 0 to and -1. So basically indexes की array है. So we define an operation as removing a character at index idx from source such that idx is an element of target index. So basically हम क्या कर सकते हैं एक ऑपरेशन में, if let's suppose b c d e f ये हमारी सोर्स है, this is the indexing, and if there is 1 present in this array, तो हम इस b को यहाँ से हटा सकते हैं and pattern remains a subsequence of source after removing the character. So pattern basically तब भी subsequence रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती इसको हटा सकते हो वहाँ से. So basically if this is a b a c d e f, so yes, even after removing this b the pattern will still be the subsequence of source, so हम b को हटा सकते हैं.
performing an operation does not change the indexes of the other characters in source. So basically for future correspondence ये indexes change नहीं होंगे. If you remove C from ACB, the character will, so this is basically the explanation. So return the maximum number of operations that can be performed. So हम ऐसे कितने max number of operations कर सकते हैं वो बताना है. I hope the question is clear. ऐसे max operations हम कितने perform कर सकते हैं हमें ये बताना है इसका count. So let's see one or two examples of this. So basically हम जीरो इंडेक्स को हटा सकते हैं और थर्ड इंडेक्स को हटा सकते हैं. So let's see क्या हम जीरो इंडेक्स को हटा सकते हैं. So if we take 0, 1, 2, 3, क्या हम जीरो इंडेक्स को हटा सकते हैं एंड स्टिल पैटर्न हमारा तो सीक्वेंस है. यस हटा सकते हैं, बता देते हैं. चलो ये हो गया. कैन क्या हम 3 को रिमूव कर सकते हैं? यस. क्या अभी भी हमारा पैटर्न है? यस, क्योंकि हमारा सोर्स एट लास्ट दोनों ऑपरेशंस के बाद क्या है, ये अभी भी इसका एक सब सीक्वेंस है. हमने दोनों ऑपरेशंस कर लिए. सो वी कैन डू एट मैक्स 2 ऑपरेशंस. ठीक है, ये हमने कर लिए. So this is how output is true. So this is how we should tell कि यार हम कितने number of operations इसमें से perform कर सकते हैं. So let's take another example to make it more clear. Our source is, देखते हैं इसमें से कितने operations हम perform कर पाएंगे and कितने नहीं. So this is basically the indexing for this array. क्या हम zero index को हटा सकते हैं? यार इसको नहीं हटा सकते. क्यों? अगर हटाया तो we will go out of the pattern कि हम इसको सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे. तो हम तो ये नहीं कर सकते. क्या वन को हटा सकते हैं? यार वन को भी हटा सकते हैं क्योंकि फिर वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा. सिमिलरली क्या टू एथ नेक्स्ट को हटा सकते हैं? यार इसको भी हटा सकते हैं. तो इनमें से हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए? जीरो. जरूरी थोड़ा ना हम टारगेट इंडेक्स में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर भी पाएंगे. इट वुड बी जीरो. यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बहुत ही ईजी है कि यार हमें इसमें से बताना है दो चॉइसेस है. क्या हम इसे परफॉर्म करें, क्या हम इसे ना परफॉर्म करें. एंड हर इंडेक्स के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास. तो यहाँ इतने के बाद ही शायद हिंट लग जाना चाहिए था कि दैट दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डीपी. फॉर एवरी इंडेक्स इन टारगेट इंडेक्स वी हैव टू ऑप्शंस कि आइदर वी डू द ऑपरेशन ऑफ दिस इंडेक्स और वी डोंट. अब होगा क्या डीपी में कैसे? सो बेसिकली हमें इनिशियली बताना है क्या, मैक्स इंडेक्सेस यूज फ्रॉम टारगेट इंडेक्स. मैं कह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्स इंडेक्सेस यूज, अगर हम निकाल लें मैक्स इंडेक्सेस वेस्टेड, क्या इससे हमारा आंसर आ सकता है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये निकालना थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू मैक्स इंडेक्सेस. कैसे? लेट्स सी. मैक्स इंडेक्सेस वेस्टेड अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? आर आंसर वुड बी टोटल इंडेक्सेस माइनस वेस्टेड. क्योंकि बेसिकली यूज वाले भी तो उतना ही होता है काउंट कि जितने भी हमारे टोटल थे उसमें से कितने वेस्ट चले गए, उसके बाद जितने ही बचे दैट आर द यूज वंस. तो अगर हम वेस्टेड वाले का काउंट निकाल लेते हैं तो वी नो कि हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. अब वेस्टेड वाले का कैसे निकाल सकते हैं? सो फॉर दिस पर्टिकुलर एरे which is source and this is particularly the pattern array, so, or I would say the string. वी नो कि यार अगर ये ith एंड ये jth कैरेक्टर मैच कर रहा है, फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट हमारे पास दो ऑप्शन है. अगर हम इसको ले लेते हैं सो इन दैट केस कि भाई इफ दे आर मैचिंग तभी हम इनको ले सकते हैं. यार इफ दिस एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जी, यार हमने इन दोनों को कंसिडरेशन में ले लिया कि यार ये दोनों सब सीक्वेंस का पार्ट बन चुके हैं. अब हम इन्हें छेड़ नहीं सकते कैरेक्टर्स को. इन दैट केस दिस इज आर आई, दिस इज आर जे. दोनों आई प्लस वन हो जाएंगे. आई वुड बी आई प्लस वन, जे वुड बी जे प्लस वन. अब इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने वेस्ट आए कैसे बताएं? इफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स जो हमने अभी ले लिया, क्या इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे?
इफ क्या ये टोटल इंडेक्सेस का पार्ट था? इफ यस, तो यार ये एक वेस्ट काउंट होगा ना। अगर वो उसमें था ही नहीं टोटल इंडेक्सेस के अंदर, नॉट प्रेजेंट इन टोटल इंडेक्सेस, तो कोई इशू ही नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जीरो वेस्टेज हुई। बट अगर वहां पर था वो, एक वेस्टेज होगा, क्योंकि हम इसको एक पार्ट ले सकते थे ना यार। सिमिलरली, इवन इफ दे आर इक्वल और नॉट इक्वल, हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसको हम ले ही नहीं रहे, हम इसको कह रहे हैं कि ये जाएगा ही जाएगा इन दिस पर्टिकुलर थिंग, हम इसको आगे मूव करा देते हैं। सो नॉट टेक वाले केस में क्या होगा? इन दैट केस आर स्टेट वुड गो फ्रॉम सिंपल आई एंड सॉरी आई प्लस वन एंड जे, पैटर्न में तो हमें मिला ही नहीं। अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि मैं कह क्या रहा हूँ। सो द थिंग इज कि यार डी, लेट्स से फॉर दिस बी सी डी ए, B C D A. Similarly, the pattern is D and target indexes are 0, 3. So target indexes are 0, 3. So whenever we are sending at any index in this source and any index in this pattern, so first thing is कि यार क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? यार मैच नहीं कर रहे, तो ये तो सबसीक्वेंस का पार्ट हो ही नहीं सकते दोनों कैरेक्टर्स, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। सो इन दैट केस आई नो कि भाई मेरा आंसर हमेशा कहाँ से आएगा? आई प्लस वन एंड जे से। एंड बेसिकली मैं काउंट क्या कर रहा हूँ? मैक्स इंडेक्सेस वेस्टेड। और वेस्टेड कब होंगे? वेन एवर एस ऑफ आई इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ जे। तो आई नो कि यार दोनों मैच कर रहे हैं, एंड इफ दिस पर्टिकुलर आई अकर्ड इन दिस एरे, तो आई नो कि मैं इनको सब सीक्वेंस का पार्ट काउंट करा करके अपने टी ऑफ इस टारगेट इंडेक्सेस वाली एरे में से उसको वेस्ट करता हूँ। सो इन दैट केस आई नो कि यार ये एक वेस्टेज होने वाली है। So अगर मैच नहीं कर रहे तो दिस वुड बी द केस, एंड इफ दे आर गोइंग टू मैच देन दिस वुड बी द केस। एंड ये नॉट मैच वाला केस तो हमेशा पॉसिबल हो सकता है। सो बेसिकली इफ वी ट्राई टू गेट टू द स्टेट एंड ट्रांजिशन, so this is our state. Basically dp of ij would be equal to minimum indexes wasted in target indexes to make pattern from J to last and source from I to last. इनको एक सब सीक्वेंस बनाने में मेरा जितना भी इंडेक्सेस वेस्ट हुए वो मैं इस पर शोर कराने वाला हूँ। एंड हमारी ट्रांजिशन क्या होगी? इफ वी आर नॉट टेकिंग एनी इंडेक्स इनटू सबसीक्वेंट, ये एक ऑप्शन है। इन दैट केस वी नो कि सिंपल हम किस पे डिपेंड करने वाले हैं? पी ऑफ आई प्लस वन जे पे। इवन इफ इट्स प्रेजेंट इन टारगेट इंडेक्सेस और नॉट, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो वेस्टेज में जाएगा या नहीं जाएगा, वो कंसीडर होने ही नहीं वाला, क्योंकि वो हम कंसीडर कर ही नहीं है सीक्वेंस के अंदर। एंड इफ वी आर taking it into subsequence, in that case our s of I should be equal to d of j, oh, sorry, p of j, pattern of j. If this is the condition and there are two options, if present in target indexes, then our wastage is 1 plus dpi plus 1 j plus 1. Otherwise, if it's not present, then it's equal to dp of I plus 1.
Yes, this plus one is simply for the basis of this particular index. So these are the transition for this, and to check whether it is present in Ti or not, we are not gonna iterate on T of I. Instead of that, we can make a set to check existence in order of one. So in that case, our total time complexity would be, there are two states, I and j, and I could go up to order of n, and this j could go up to order of m. So this will be our total time complexity and space complexity as well. So let's see the code for this problem. So these are the two things, the and set, that I had initialized out of the function, and for every value present in target of indexes, I had inserted it into the set, and I had initialized my dp with -1 by using this memset function. And this f function basically takes two parameters that are changing, that are I and j, and this source and pattern are just passed. So whenever j is equal to pattern of length, so basically we had covered total all the patterns. So there are, this basically pattern is completed, so we can return 0 from here. And if our pattern is not completed yet but the source array is exhausted, so in that case we have to return some default value, so that we know we haven't got any answer from this state. And if the answer is already computed, we are going to return it. And if we are not taking, so we know in case of not taking, our answer will be from I plus 1j. So this is not take part from in which we are computing I plus 1 and j. And in the part of take, only if source is equal to pattern, then we are going to consider it. And the answer is I plus 1 j plus 1. And if this take is, the this particular index is present in set, so we are going to increment it by 1, otherwise it will be same. And for any state, our answer would be minimum from both the take and not take states. And we know कि हम यहाँ से हमने ये क्या compute करा है. This is our wastage. So our answer is total minus wastage. So total is basically size of target indexes, and this is our wastage. So this was the code for problem number C.